All right. So we are into the third lecture now. We'll start now. Okay. So we shall have a little quick brush up of what we did in our previous class. So we were discussing what is referred as numerical integration. First thing which we did was rectangular rule. And here what we did, that given integrand function fx, we approximated it with a constant function. Then what we did is that we use trapezoidal, where the function fx was approximated by a straight line or a linear function. Okay. Then further we moved and we have seen Simpson's 1/3 rule, where we approximated function fx by a quadratic function. And then I think towards end, I mentioned about Simpson's 3/8. So that Simpson's 3/8 formula will use the cubic function. Okay. So we'll discuss this one in a moment. Simpson's 3/8 rule, where fx is approximated by a cubic function. Okay. So if you notice carefully, fx is any general function. So it is like first degree constant, second linear, third quadratic, and then cubic. So if you approximate a function by different functions, you will get different methods. In the case of rectangular rule, you evaluate the, when you are evaluating for the number of points which are required, you require 2 points. In case of trapezoidal also you require 2 points, but in case of Simpson you require 3 points, and that's why here there was a special condition that the number of partition n must be even. In case of Simpson's 1/3 rule, since you will be trying to develop a cubic function, and you know that if you want the general trace, the form which looks for a cubic function, y is equals to x cube, or even any other cubic function like a cubic polynomial, in general it will be looking like this. So if you want to plot a cubic function, then you will require a minimum of 3 points, which will be minimum of 4 points, which will be required for the cubic function. And therefore the number of partitions when you make in case of cubic, that must be 3m plus 1. Okay, 3m plus 1. So like if m is equals to 1, then minimum 4 points are required, and then plus 3 plus 3 plus 3, that will be how those numbers should be added. So that for every repeated case, you will require 1 extra point. So what is this Simpson's 3/8 rule? Simpson's, this is 3/8 rule. What does this rule say? So first thing first, in this rule, the number of partitions must be equals to 3m, multiple of 3.
Then you know that corresponding to, we have already discussed, the corresponding to value fxj, we will call it as fj, right? For example, fx0 is f0 and so on and so forth. Then the integration from a to b of a function fx dx is given by 3 by 8 h. That's why this is referred as 3 by 8. And in case of 1/3, there is, you remember here it was h by 3. 3 by 8 f0, first term and last term you always write as it is, correct? First term you write as it is, and the last term also you will write. Let us say we write here fn or f2m, n is actually 2m, plus in between the terms will come with different coefficients. So here you have to notice that how these terms will come. So in case of Simpson's 1/3, the coefficient was 1, 4, 1, 4 and 2, 1, right? In case of Simpson's 3/8, the coefficient are 1, 3, 2 and then 1. So this is how this coefficient will be written. So f1, f2 will appear with the coefficient 2, and f3 will appear with the coefficient f1 and f3 will appear with the coefficient of 3, and f3 will appear with the coefficient of 2. Then further f4 and f6 will appear with a multiple of 2, because basically these multiple of 3, they will be actually at the border. So that's why it is happening. If connect it with the Simpson's 1/3 rule, so then dot 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 the last two values. So here you can see, easily see dot dot dot, whatever the point is n, you can always see the number which will appear is fn minus 3. Okay, and here you will get fn minus 2 plus fn minus 1. So the total number of functional points, they will be associated here. I hope you understood the formula. So this is how the formula will work. So what is the discussion which is going on? Moodle is working. You can upload there also. Okay. So as I told you earlier, when I ask you about the questions, at that time you ask, please refrain from discussing here. Otherwise you won't understand. Okay. So the point here is what I'm saying here, in case of Simpson's 1/3 rule, you choose the number of points as n is equals to 3m plus 1. Like here, so maybe this is creating confusion. I should erase this one here. The number of partitions which you choose is n is equals to 3m plus 1. Partitions. Here also partitions. N is equals to 2m, n is equals to 3m. This is what you choose, and because of that, the points which you get, they become like 3m plus 1 or 2m plus 1. So if you are having in confusion here, then Simpson's 3/8 number of points will be equals to 3m plus 1. I think now it makes clear. So now everything is probably clear, right? No confusion at all. As I mentioned, please refrain from unnecessary discussion in the chat, okay? All right. So
this is what the formula is, and then we have to kind of remember this formula. Now let us say that we want to evaluate one integral, which we have already seen earlier. So say we want to evaluate the integral I, which is 1 upon 1 plus x square dx. Okay. Exact solution you already know. Exact solution is I is equals to tan inverse, sorry, limits 0 to 1, tan inverse 1 minus tan inverse 0. So that will give you tan inverse 1, which will give you pi by 4. If you evaluate the value of pi by 4, it should give you approximately 7853, I think. You just check this one. So this should be the value of pi by 4. Now we have to evaluate it using Simpson's 1/3, some Simpson's 3/8 rule. Okay. Trick to remember. So what you can do here is that you just think about the coefficient. I mean, previous case, it was very simple. If you have seen 141, right? So that was giving you the coefficient because the 1 was repeated. Therefore, 1421. That is how you are getting. Here it will come as in this form 1, 3, 2, 1, and these like 3/8 is the coefficient here, which you should not forget. I mean, you don't have anything which which can be so easy to remember, but you can think it that the multiple of 3 will appear with a coefficient of 2, and others will appear with a coefficient of 3. This 3, so 3 is something which is common here. And f0 and fn, first and last, as in case of any method, the first and last were like having the coefficient 1, whether it's 1/3 or 3/8, both of them are having, first and last are having coefficient as 1, and then f3 multiple of through 2, and then others with multiple of 3. So that way 3, 6, 9, etc. And then you can think that 3 times whatever is left out. So say for example, if only f0, f3, f6 up to 6 was here, then you would have written here f0, f3 here, f6 here, n is equals to 6, and then remaining all here f1, f2, f4, f5. So that's what you will get. So that's, I think, a simple thing to recall. Okay, let's check when I write this next example, the complete example as a numerical solution. So for this, first thing first, if you check in the example, let me make it a little bigger for you. A is equals to 0 and b is equals to 1. So first thing first, you have to make here 3 times partition, right? 3m kind of partition. N is equals to multiple of 3. So what should you choose n, right? You can choose n to be 3, 6, 9, etc. So suppose that I choose n is equals to 6, so that at least I will get some points which are good enough, and I will not get too many points. So what is h here? H is equals to b minus a over n, which is 6. So that is equals to 1 by 6. As I told you earlier, xj is equals to a plus jh. That means it is jh, where j lies between 0 and n. N is equals to 6 here. All right. And what is fx here? Fx is 1 upon 1 plus x square. So I can make a table now. X values. X values are given by this one. X0, which is 0. X1, which is 1 by 6. X2, which is 2 by 6 or 1 by 3. X3, which is 3 by 6 or 1 by 2. X4, 4 by 6 or 2 by 3. X5, 5 by 6. And last one, x6 is equals to 1.
Now fx is 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus 0, that is 1. So these values we can evaluate numerically, right, using calculator. 1 by 1 plus 1 by 6 square, that will give you 36 by 37. And you do the calculation, this will give you 0.973. Similarly, you do the other calculation, 0.3. Okay. Sorry, 0.9. 1 by 1 plus 1 by 3 square will give you 9 by 10. So 0.9. 0.9. Then 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 plus 1 by 2 square, that is 1 by 4. That will give you 4 by 5. That will give you 0.8. Similarly, other values I will write, I think, yeah, 0.746. I have already calculated. You calculate all the values using calculator. 0.64 and 0.543. First of all, in order to apply the formula, we have to identify the f values. As I told you earlier, I will consider these f values as fj's. So first value is f0, this is f1, this is f2, this is f3, this is f4, this is f5, and this last one is f6. Now I will write the formula. So integration 0 to 1 dx upon 1 plus x square. As I told you, the formula is 3 by 8 first, because it's the 3/8 rule, into h is 1 by 6. First you put f0 and the last value. So f0 and f6 will sit with coefficient 1. So first thing first, you put f0 and f6, and then 3 multiplied by something plus 2 multiplied by something. So now 2 multiplied by multiples of 3. So multiple of 3 is f3, and then f6 is already there. So it will end at f6. f6 will not be written here. And multiples of 3 will be f1 plus f2. What is left out? f3 is already there, f4 and f5. So this becomes our formula. Substitute the values of f0, f1, f2, f4, f5, f3, f6 from here. Do the calculation. So finally, after doing the calculation, you will get 0.78539, which is pretty close to the value, which is pretty close, exact value. Okay. So this is how we apply the Simpson's 3/8 rule. I hope this is clear. If there is a doubt, we can discuss. All right. So if there is no question, then I can move forward. Okay. Sir, in this example, Simpson 1/3. Yes, of course. In every example, see, whatever example we have discussed here, all methods can be applied on each and every example. Okay. Because here we have equidistant partitions. All the partitions are equal. And only thing is that n may or may not be given in question. It will depend. So suppose I give you an interval and I may ask to choose some certain n to be precise. But in general, you have to choose n, and that should be reasonably large enough. Not very small, but reasonably large enough to get accurate value. If you choose bigger n, you should be able to understand that this will give you a better result. So let me just choose another example for you, and then probably you will understand it in a better way. So many times what will happen, and I will come back to the further questions also if there are any. So hold on with your questions if there are any. So in many cases, what will be given as that you have to find out the integration a to b fx dx, and instead of given function, ये जो function है ना, ये फंक्शन नहीं दिया होगा. जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये वाला फंक्शन दिया हुआ था और इससे आपने वैल्यूज इवैल्यूएट किया, टेबुलेटेड वैल्यूज इवैल्यूएट किया. हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, x दिया हो
और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हो। तो x मान लो x0 पे कुछ वैल्यू दी हुई हो, x1 पे कुछ वैल्यूज दी हुई हो, x2 पे कुछ वैल्यूज दी हुई हो, ऐसे ऐसे करके, और आपसे पूछा जाए कि भाई अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इस तरह से रिलेटेड है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। या एक एग्जांपल जो मैं कराने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू वन एग्जांपल वेयर इवन ये भी हमें हो सकता है कि डायरेक्टली ना दिया हो कि जो डेटा है वो किस तरह से एक्स और एफ एक्स को कैसे रिलेट कर रहा है, बट एक फिजिकल एग्जांपल हो जिसकी सहायता से आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो यूजिंग इंटीग्रेशन. So consider this example. I need everybody's attention for some time. So example है let me write this example for you first here. The just hold on a second, please. Okay, so the example is this. एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपकी, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, जिसकी स्पीड आपकी जो है अलग अलग टाइम पे एट वेरियस टाइम्स दो स्टेशन के बीच में, लीविंग स्टेशन ए एंड जब तक वो क्या कर सकती है, दूसरे स्टेशन पे पहुंच नहीं जाती है, अंटिल स्टॉपिंग स्टेशन बी. तो जाहिर सी बात है अगर स्टेशन ए से शुरू कर रही है तो उसकी स्पीड यहाँ पे 0 होगी, स्टेशन बी पे रुक रही है तो वहां पर भी इसकी स्पीड क्या होगी, वो उस जगह पे उस. So I'm considering this in a different way, which I will consider later. Let us say this is data is given. So it is stopping at station, some station it is stopping, and this is like you have a data of station B. So until reaching, instead of saying stopping, I'm not giving you 0 speed here. So until reaching station B. So it's crossing some station, and at station B, it is crossing that one. Therefore, there is a non-zero speed here. Okay. Are given as फर्स्ट डेटा हमें दिया हुआ है स्पीड kmph में, और दूसरा डेटा हमें दिया हुआ है टाइम मिनट्स में. ओके, सो पहला है 0 पे, तो जब टाइम 0 है तो उसका स्पीड 0 है, यहां से शुरू कर रही है वो. 13 है उसकी, आधे मिनट के बाद में उसकी स्पीड 13 हो जाती है. 1 मिनट के बाद में उसकी स्पीड 33 kmph है. 1.5 मिनट के बाद में उसकी स्पीड 39.5 है. 2 मिनट्स के बाद में 40 है. 2.5 मिनट्स के बाद में भी 40 है, और 3 मिनट्स के बाद में उसकी स्पीड मान लो 36 है. तो ये स्टेशन बी है जहां पे 36 उसकी स्पीड अभी दिखा रहा है. तो अभी हमें यहां से क्या फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच की हमें दूरी पता करना है. तो क्या करना है, इस तरह के केस में क्या है कि हमें यहाँ पे देखो तो डेटा दिया हुआ है. वी आर नॉट गिवन एक्चुअली that what function we should find out, how to find out the limit of the integral. Nothing is given here, but this kind of data is given. But you can easily see how we can apply the idea of our numerical integration in order to find this one. So ये आपका स्टेशन A हो गया, ये स्टेशन B हो गया, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्टेशन A पे टाइम
TA से शुरू कर रहा है और टाइम TB तक दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पीड आपकी VA से शुरू कर रही है और VB तक दिया हुआ है, जो भी स्पीड है। एक फार्मूला आपको पता होगा कि जो स्पीड होती है, और सपोज स्पीड इज V, स्पीड क्या है in terms of differential, that is the distance by time, by the way, but if you make it to be very small, so if the distance is dx, then the time will be dt. So rate of change of position is actually nothing but your speed or velocity. So V is actually dx by dt. So from here, if I, and V eventually is a function of time, because at different point your different values of time are given. So if what we do here is that dx कहां से कहां के बीच में, पोजीशन A से पोजीशन B के बीच में अगर हमको dx पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू v dt, यहां से हो जाएगा। और ये चूंकि t की वैल्यूज है, तो वो ta से tb के बीच में हो जाएगी, बिकॉज ta पोजीशन A पे जो है ta है टाइम, और पोजीशन B पे tb टाइम है, तो यहाँ पे t की जो लिमिट्स हो जाएंगी वो ta से tb के बीच में हो जाएंगी। और यहाँ पे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a से b के बीच में। तो x इज इक्वल टू अगर a से b के बीच में निकालना है, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, that integral dx is equals to integral dv dt. So that is actually, what is this giving? This is basically, this integral left hand side is distance between A and B, और वही हमें निकालना है। इसका मतलब यही चीज हमको फाइंड करनी है। So we should find out the integral v dt. Now you know integral v dt. So for this, instead of given the functional value, you are given the value of v at different time between ta and tb, and therefore you can apply it. So you consider ta as your t0, like you are considering x0, same way it is t0, and this tb as your tn, and apply the formula which is there. I will show you how you can do this one. So first thing first, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, solution. So first thing first, what we do here is that we write out the speed, कि हम ph किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो मिनट्स में हमें दिया हुआ है टाइम, टाइम आवर में कन्वर्ट कैसे, अगर मिनट्स में टाइम दिया हो उसको आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 by 60 will make it 0, 13 इस पे तो रखनी पड़ेगा, 1/2 by 60, तो it will be like 1/120, 33 1/60, 39.5 speed, 1.5 by 60, so that will make it so you can see that will make it 15 by 600. That means this will be 1/140, 15 by 600. डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लो, 42 by 60, that is 1/30. Same way 2.5 by 60, that will be 25 by 600, that will make it 1/24. 40, 1/24, and the last one 36, तो वो 3 by 60, that is 1/20. तो ये जो पॉइंट्स आपके बन गए, ध्यान से आप देखना है हमको किसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द टाइम t0। सो आप डेटा आपका किस तरह से दिया हुआ है, t0, ये t हो गया, t वेरिएबल, और ये आपका v वेरिएबल हो गया, v विच इज अ फंक्शन ऑफ t, vt ऐसे लिख लो, लिख सकते हो आपको। तो x fx की जगह पे आप डेटा देखो t vt में दे दिया हमको, ठीक है ना। तो ये t0 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी, v0, ये t1, सो ये v1, ये t2, तो ये v2, ये t3, सो ये v3, ये t4, v4, t5, v5, t6, v6. All right, so now what we need to do, we just need to find out the distance between 2 points A and B, and the distance between these 2 points A and B, A and B is nothing but, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगा, is nothing but integral of v dt between A to B, and at A t is equals to ta, at B t is equals to tb. Okay, so we'll find that
distance is equals to integral of vt dt for from t0 to कितनी वैल्यू है यहाँ पे t6, ओके, t0 टू t6, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके. नाउ वी हैव टू सी, क्वेश्चन इज which formula should we use. हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, 1/3 है, 3/8 है, तो कौन सा यूज कर सकते हैं. सो यू नो दैट कि ट्रेपेजॉइडल एंड रेक्टेंगुलर दे आर लेस एक्यूरेसी मेथड. सो सिम्पसन्स 1/3 या सिम्पसन 3/8 में से हम कौन सा यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा जो हमारा है वो देखो तो इक्वी डिस्टेंस है. हर एक डेटा वैल्यू जो है वो आपकी 1/120 जो आवर है उसके उसमें है, या 0.5 मिनट्स के डिफरेंस पे है. तो h इज क्लियरली हियर इज 0.5 मिनट्स और 1/120 आवर्स. सो h इज इक्वल्स टू 1/120. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव नोटिस्ड हियर. h इज इक्वल्स टू 1/120. और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं 7. दैट मींस हाउ मेनी पार्टीशंस आर 6. सो n इज इक्वल्स टू 6 है. तो इवन नंबर भी है और ये 3 का मल्टीपल भी है. तो आप चाहो तो यहाँ पे 1/3 भी लगा सकते हो और 3/8 भी लगा सकते हो. Let us use 1/3 method so that the calculation can be faster and reasonably accurate. So we shall use Simpson's 1/3 rule. तो हम क्या करेंगे, Simpson's 1/3 rule लगाएंगे, okay. So then for that integral will be equals to, according to Simpson's 1/3, what is this, 1/3 into h. h मैंने क्या बताया अभी, 1/120. देन v0 और vn को सिम्पसन्स 1/3 में हम ऐसे लिख लेते थे ना. यहाँ पे vn कितना है v6. सो v0 और v6 को हम ऐसे लिख लेंगे. बाकी 4 के मल्टीपल में सारे ऑड वाले आ जाएंगे और +2 के मल्टीपल में सारे इवन वाले आ जाएंगे, राइट. सो हाउ मेनी आर्ट्स आर देयर, सॉरी यू शुड राइट v1 प्लस v3 प्लस v5 और इवन कितने हैं v2 प्लस v4, वो सारे इवन हो गए. नाउ यू हैव द डेटा हियर, v0 v1 v2 v3 एक्सेट्रा. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबकी वैल्यू. आई होप यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस स्लाइड द डेटा कैन बी सीन. 1/360 v0 is 0 plus 4 times v1 v3 v5 आपका हो जाएगा 13 plus 39.5 plus 40 plus 2 times v2 plus v4. v2 is 33 and v4 is 40. 33 plus 40 and v6 आपका हो गया 36. When you do the calculation, finally I'm just writing the final calculation, then you will get 1.53. so ये वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर्स, ओके. सो दिस इज योर आंसर. सो डिस्टेंस जो आपकी है वो हो गई उन दोनों के बीच में 1/1.53 kilometers. Please have a look and let me know. 1.54 मेरा 1.53 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा. That may depend little bit on the way we have calculated. 1.54 आ रहा है. That's okay. So let me put a slash then, 1.53 or 1.54. So whichever is there. As I told you, the closest one we shall consider. वैल्यू ऑफ h कैसे निकाले. वैल्यू ऑफ h क्या होता है आपका, डू यू रिकॉल व्हाट इज h. फॉर्मूला में जाते हैं. h कैसे निकालते हो आप, b minus a by the number of partitions, okay. so number of partitions जो है वो क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं उनसे एक कम होता है. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर, 7 पॉइंट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पॉइंट्स आर देयर. तो वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे
6 हो जाएगा, है ना, n इज इक्वल्स टू 6। और इसको आप सिंपल से निकाल सकते हो, आई कैन टेल यू, मे बी आई विल राइट इट हियर। सो इसको आप सिंपल से निकाल सकते हो, 1b आपका हो गया 1/20 माइनस a 0 अपॉन n 6, दैट इज इक्वल्स टू 1/120। ये तो हमारा हो गया फार्मूले से जैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा एक रास्ता क्या होता है कि इसके t1 और t0 के बीच का अंतर कितना होता है, h होता है ना। तो आप t1 में से t0 घटा दो, t1 तो आपका क्या है 1 है और 1/120 है, t0 कितना है 0 है, तो सीधे सीधे आपको 1/120 मिल जाएगा। अदरवाइज आप रूल जो है उसके थ्रू जाओगे तो यहाँ से मिल जाएगा, ओके। सो आइदर वे यू कैन गेट दैट h इज इक्वल्स टू 1/120। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके। सम ये क्या पूछा है, सिम्पसन 3/8 भी लगेगा, of course because it is multiple of 3, so naturally you can apply here Simpson 3/8 also, okay, so you can apply 3/8 also and then you will get the value. So definitely this is this can be evaluated by using both the methods. Fine then. So with this we complete the discussion of this class of methods जो हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। This class of methods are referred as Newton Cotes methods. तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर रूल था, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रेपेजॉइडल था, rectangular is also there but it is different category, but let's, okay, we can include that also. So rectangular, trapezoidal, Simpson's 1/3, Simpson 3/8, सारे के सारे वो क्या थे, हमने हर एक को जो है वो पार्टीशन किया हुआ था, a is equals to x0 x1 dot dot dot, equidistant partition है सारे, xn is equals to b. So given an interval a to b, we partition them in the equidistant exercise are equidistant इसका मतलब हर एक x1 से x0 x2 से x1 जो भी कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी बराबर है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे। और वो ये हम एक फिक्स्ड पार्टीशन अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं एक्स आईज यहाँ पे वो हमारे फिक्स पॉइंट होते थे उस किसी भी इंटीग्रल में, चाहे सिम्पसन्स 1/3 हो, सिम्पसन 3/8, वो सब में ये वैल्यूज हमारी फिक्स होती थी, x0 x1 x2 वगैरह वो हम फिक्स कर देते थे, राइट। उसको हम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते थे कि a से b तक अगर कुछ है तो इसको x0 इज इक्वल्स टू a बोल देते थे, xn इज इक्वल्स टू b बोल देते थे, और बीच के सारे पॉइंट्स को हम लोग पार्टीशन कर लेते थे x1 से xn-1 तक, और उनका जो फार्मूला होता था हमारा xn इज इक्वल्स टू a प्लस jh, जहाँ पे h आपका क्या होता है b माइनस a बाई n, और j आपका क्या होता है 0 से n के बीच में वेरी कर रहा था। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, राइट। और हमें जो फार्मूले मिले उस सब फार्मूलों को देखोगे तो सबको एक जेनरिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, fx dx इज इक्वल्स टू समेशन, समेशन का मतलब इस सिंबल का मतलब तो समझते होंगे सारे लोग, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन i इज इक्वल्स टू 0 टू n लैम्डा i fx i। इसको एक्सपैंड करके अगर लिख देंगे हम लोग तो बन जाएगा लैम्डा 0 fx 0 प्लस लैम्डा 1 fx 1 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n fx n। उदाहरण के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल में अगर देखोगे तो लैम्डा 0 आपका वो 1 होता है, लैम्डा n आपका वो 1 होता है। ऑड वाले केस में वो वहां पे अगर याद हो तो क्या होता था 4 टाइम्स होते थे ना, सारे के सारे जो ऑड होते थे, तो सारे लैम्डा 1 लैम्डा 3 इसमें जो है वो 4 हो जाएगा, और लैम्डा 2 लैम्डा 4 एटसेट्रा वो सारे 2 हो जाएंगे।
तो उस तरह से आप कंपेयर करोगे तो हर एक लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी, राइट। मोर जेनेरिक फॉर्म में जो इंटीग्रल होते हैं जो हमें इवेल्युएट करने पड़ सकते हैं कभी, वो इस फॉर्म के होते हैं wx fx dx। थोड़ा मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूं अभी। तो इसका मतलब उन इंटीग्रल्स को भी अगर हम चाहें तो i इज इक्वल टू 0 से n के बीच में लैम्डा n लैम्डा i fx i ऐसे करके हमने इवेल्युएट किया है अभी तक, जबकि wx हमारा जो है न्यूटन कोट्स फार्मूले में आइडेंटिकली 1 है। ओके, सो न्यूटन कोट्स फार्मूले जो है वो ये वाले, वो एक इस जेनेरिक फॉर्म ऑफ फार्मूले से आ रहे हैं, जहां पे लैम्डा आई एफ एक्स आई टाइप के सोल्यूशन उसका वो हमें इंटीग्रल मिल रहा है, वेयर if w is 1 then these integrals are written as this one. Why am I telling you all this? Because I am going to generalize this idea, what I have discussed right now. I'm going to generalize this idea. Okay, so the point which I'm trying to make here is that an integral, when you are evaluating it numerically, is nothing but linear combination of the values of the function evaluated at different points in between a and b. And those different points, if they are fixed a priori, exercise, then the methods are referred as Newton-Cotes method. तो न्यूटन कोट्स मेथड वो सेट ऑफ मेथड्स हैं जहां पर हमने एक्सरसाइज को पहले से फिक्स कर रखा है। तो एक नया आइडिया आया, आई मीन इट केम लॉन्ग अगो, बट एक नया आइडिया है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कैन वी फाइंड आउट मेथड्स विदाउट फिक्सिंग दीज एक्सरसाइज अ प्रियोरी। एक्सरसाइज को क्या हम रैंडमली, जो एक्सरसाइज है इसको हम कहीं भी चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या लैम्डा आईज को चूज कर सकते हैं। देन द सॉल्यूशन केम एज यस, and it was found that these methods which I am going to discuss now, they give better accuracy with lesser effort. क्योंकि यहां पर क्या है, आपको टोटल n पार्टीशन करने पड़ रहे हैं और वहां पर क्या है, आप अलग से पहले से फिक्स पॉइंट पे कुछ वैल्यूज निकाल रहे हो, तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो कम हो जाएंगे। आई विल शो यू इन मोमेंट, यू विल सी दैट। एंड so the idea is that we are evaluating in that in the next set of solutions, numerical integrations, we will evaluate these exercise and lambda is both and try to figure out what will be the integration of the numerical what will be the numerical integration of the function fx in the limit a to b. okay, तो पार्टीशन करने से हम बच जाएंगे, बहुत सारे पार्टीशन हमको नहीं करने पड़ेंगे, हमें फिक्स पॉइंट पे वैल्यूज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। These set of integrals are referred as Gaussian quadrature. Okay, quadrature is a word for integration. Olden time में quadrature use होता था और during this 20th century लोगों ने इंटीग्रल यूज करना, न्यूमेरिकल इंटीग्रल यूज करना शुरू किया। तो गॉसियन क्वाड्रेचर या गॉसियन integration rules or methods. Okay, so these are the methods which we are going to discuss. Let me first discuss this one and then we'll discuss methods in detail. Okay, so उदाहरण के लिए जो पहला मेथड है, सबसे फर्स्ट मेथड मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपका, इट इज रिफर्ड एज गॉस लेजेंड्रे 2-point रूल। इसके सारी निटिग्रिटी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी थोड़ा सा ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो लिमिट है वो -1 से 1 होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कंसीडर। ए से बी में अभी नहीं है, ओके।
लिमिट ये वाले मेथड में fx dx, अगर -1 से 1 के बीच में fx dx को निकालना है तो गॉस लेजेंड्रे मेथड में कहता है इसको आप लैम्डा 0 fx0 2 पॉइंट है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटीग्रल देखो कितना है, इंटीग्रल इज फ्रॉम -1 टू +1। तो -1 और +1 के बीच में 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, एक -1/√3 और एक +1/√3। So we'll evaluate the function value at these points. So lambda 0 and lambda 1 fx1. So the 2 points which are selected here, this is x0 and this is x1. And once you do that, you will figure out that lambda 0 and lambda 1 turns out to be 1. So the formula becomes f at -1/√3 plus f at +1/√3. So this is your Gauss Legendre 2-point rule or 2-point method for integrating a function between -1 to 1. And this gives a very good accuracy. Why this method should be preferred? Because it has less computation. अगर आपको कम से कम earlier तो आपको देखा था ना कितना सारा, सिर्फ 2 पॉइंट पे आपको वैल्यू इवेल्युएट करने पर अगर एक्यूरेसी मिल रही है इसी उसकी, तो दैट इज रीजनेबल, राइट। सो नोटिस केयरफुली, जो गॉसियन मेथड्स हैं वो भी आपके क्या होंगे, दे विल आल्सो बी ऑफ द फॉर्म a से b wx fx dx, और उनको भी हम क्या करेंगे, समेशन लैम्डा i fx i इज इक्वल टू 0 टू n, उनके फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे कुछ लैम्डाज आपके 0, 1, 2 कैसे भी हो सकते हैं। इन गॉस लेजेंड्रे, जो गॉस लेजेंड्रे का केस है, इस केस में अगर देखोगे तो क्या होगा, wx आपका आइडेंटिकली 1 है, गॉस लेजेंड्रे में wx आपका आइडेंटिकली 1 है, और a और b, a इज इक्वल टू -1 है और b इज इक्वल टू +1 है। गॉस लेजेंड्रे हम लोग तभी लगा सकते हैं जब लिमिट आपकी -1 से +1 के बीच में हो। इंपॉर्टेंट, गॉस लेजेंड्रे फार्मूला, फार्मूला मतलब ये वाला फार्मूला, फार्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन लिमिट्स आर -1 to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ठीक है ना। तो -1 से 1 के बीच में जब होगी तो वो गॉस लेजेंड्रे 2-point फार्मूला हो जाएगा। सो लेट अस राइट नाउ गॉस लेजेंड्रे। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड 2-point फार्मूला और रूल। मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, गॉस लेजेंड्रे रूल या गॉस लेजेंड्रे 2-point फार्मूला। ओके, -1 से 1 fx dx is equals to f of -1/√3 plus f of +1/√3। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। कोई एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। So the example is, consider the integral -1 to 1 x plus 1 dx. I think all of you must be aware that this integration is equals to 2. Okay, because first one is odd function, second one is 1, so its integral is 2. Now let us see from the Gauss Legendre. So -1 to 1 x plus 1. यहाँ पे fx क्या है? If you notice carefully, what is fx here? X plus 1. So f of -1/√3 क्या हो जाएगा? -1/√3 plus 1. f of +1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3 plus 1. So दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 is equals to 2. Although you can very easily evaluate this integral, but I just showed you that this integral, I mean this method or this rule
is pretty useful and it gives pretty accurate value. मतलब ये काफी जो है वो हमें accurate value देता है जो actual values हैं उनके, मतलब जो integral values हैं उनके. Okay, let me see if anyone has any question. Y minus 1 and 1, yes, it's a very interesting question. अभी तक नहीं बताया सही में, किसी ने बोला हुआ है. And any derivation, yes, it will come, everything will come, just have patience, we will derive, we will do everything. Okay, so don't worry about it. So 1 by root 3, yes, कुछ गड़बड़ किया है देख लूंगा मैं. Any derivation, repeat this method. 1 by root 3. Okay, so लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है? लैम्डा इज कोएफिशिएंट, लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो उसका कोएफिशिएंट है कुछ भी, वेट जिसको बोल सकते हो कि fx के पहले क्या लिखना है, तो fx का कोएफिशिएंट कितना है. जैसे आपका व्हाट इज दैट, सिम्पसन्स 1/3 में f1 का कोएफिशिएंट कितना था 4, f2 का कोएफिशिएंट कितना था 2, तो ऐसे करके वो है. ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा. f1 is equal to 4, f2 is equal to 2, like that. So lambda 1 is equals to 4, lambda 2 is equals to 2, like that. Okay. मैं तुम्हें कन्विंस कर, अभी मैंने ज्यादा डिस्कशन किया नहीं हुआ है. आई हैव नॉट डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, सो प्लीज हैव पेशेंस. मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, so that I convince you कि this method is good enough. For example, let us integrate -1 to 1 1 upon x plus 1. ठीक है, तो dx. सो एक साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू है. सो -1 to 1 dx upon x plus, make it little correction here, make it x plus 3, x plus 3. so everybody knows that इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln x plus 3 with limit -1 to 1. जो वैल्यू आप निकालोगे उसके बाद में, तो ये बन जाएगा ln 4 minus ln 2. ln 4 is 2 ln 2, so eventually this value will be ln 2. ln 2 का सबको वैल्यू शायद याद होगा, 0.69 समथिंग होता था, है ना, 693 के आसपास कुछ वैल्यू होता था. आई होप यू रिकॉल दैट वैल्यू. इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इसका 0.693 हो गया है ना, रफली. ln 2 का वैल्यू चेक कर सकते हो क्या होता है. Now let us evaluate this integral via our method. So here clearly fx is equals to 1 upon x plus 3. लिमिट्स जो है आपकी वो क्या है, लिमिट्स आर -1 to 1. तो दोनों चीजें आपकी पता है आपको. देयरफॉर जो गॉस लेजेंड्रे मेथड है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कि लिमिट्स आपकी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो आप गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट रूल लगा सकते हो. देयरफॉर आई कैन अप्लाई द गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट रूल. If I apply the Gauss-Legendre 2-point rule, the Gauss-Legendre 2-point rule, I hope you are convinced that we can apply the Gauss-Legendre 2-point rule. Then from there, -1 to 1 dx upon x plus 3 will become 1 upon x की जगह पे क्या करोगे, -1 by root 3. f of 1 by root 3 रखना है ना, plus 1 और f of plus 1 by root 3, तो 1 upon 1 by root 3, सॉरी ये 3 होगा यहाँ पे, 1 by root 3 plus 3. Those who can notice, they can carefully notice that it is written as, अगर हम लोग इसको लिख लें तो 1 upon a minus b, 1 upon a plus b, है ना. तो उसको एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2a, a माइनस बी, a प्लस बी अगर करोगे तो ये हो जाएगा 6, एंड दिस गिव्स यू 18 by 26. 18 by 26 is roughly 18 by 26 9 by 13, which is approximately equals to 0.692, जो कि हमारा जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसके काफी करीब है, which is pretty close. So you can see that without a lot of complications, we have it's a non-linear function. If you look at it carefully, it's a non-linear function, 1 upon x plus 3, है ना? So it's not a linear function like earlier function. It's a non-linear function, and you are able to do that one. Okay, so which means that I have convinced you with help of this example that a pretty good result can be obtained by using this 2-point method. But one restriction which I have showed you is that the limit must be from -1 to 1. तो हमारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर लिमिट -1 से 1 के बजाय कोई जनरल a to b लिमिट हो तो क्या करेंगे भाई, है ना? There is a problem, right? So can we apply this method if the limit is a to b? So the answer to that question is yes, we can apply this method if the limit is from a to b. For that, we convert our integral to limit -1 to 1 using transformation. Okay, we will use some transformation. So suppose the function which is given to us in a to b is in some variable ft dt. तो हम क्या करेंगे, t वेरिएबल से x वेरिएबल में इसको शिफ्ट कर देंगे, मतलब t वेरिएबल की जगह पे एक फंक्शन ऑफ x कुछ जो है रिप्लेस करेंगे. ओके, नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो वो हम यहाँ पे कर देंगे, और उसके बजाय यहाँ पे कुछ हमें नया फंक्शन मिलेगा एफ एक्स का, एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा ये -1 से 1 के बीच में. ठीक है, उसको कुछ f1 जैसा भी आप कॉल कर सकते हो, कुछ फंक्शन बनेगा इवेंचुअली, मान लो f ही बनेगा उसको, तो वो आपका है. सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन which is having limit a to b into a new function which is having limit -1 to 1, and on that function we can apply our Gauss Legendre, because here इसका f1 का वैल्यू -1/√3 पे और इसका वैल्यू +1/√3 पे कैलकुलेट करके we can simply evaluate the integral using Gauss Legendre method. Okay, and it should not be very difficult. I mean, the whole point is that we are transforming. तो अगर मान लो हमारी वैल्यूज जो है ये a से b के बीच में है, तो हमें केवल क्या करना है, उन वैल्यूज को -1 से 1 के बीच में करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, b को -1 से +1 से मिलाना पड़ेगा. स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाया मैं. b को हमें +1 से मिलाना पड़ेगा, a को हमें -1 से मिलाना पड़ेगा, और बीच के सारे पॉइंट्स को ऐसे ही हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट से मिला देना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज t वेरिएबल and this is x variable. So what rule we have is that x is equals to 1 for t is equals to b, and x is equals to -1 for t is equals to a. So we assume there is a linear relationship, t is equals to, which we don't know at the moment, alpha x plus beta. t को हम मान लेते हैं कि वो अल्फा x प्लस बीटा है. अब x इज इक्वल टू -1 पे t की वैल्यू a है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू a, implies that
a इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 पे t इज इक्वल्स टू b है, तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो b इज इक्वल्स टू x इज इक्वल प्लस 1 पे, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दोनों को उठा करके जोड़ दो तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, और सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, b माइनस a, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू अल्फा इज इक्वल्स टू b माइनस a बाई 2. So this transformation will work if I choose alpha is equals to b minus a by 2 and beta is equals to a plus by 2. So the transformation जो हमारा बन गया वो क्या हो गया, b minus a by 2 x plus b plus a by 2. So this becomes our transformation. So given any function with t which is having t limits, ये ध्यान रखना है कि t में ही रखना है हमको. So given any function which is having t limits from a to b can be transformed to another function which is having x limits from -1 to 1. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं. तो चूज दिस एग्जांपल. सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल 0 to 1 upon 1 plus x dx. Although it can be very simply seen that this integral is very easy and its value is ln2, which you can see that. But let us say that we want. So first thing first हम क्या करेंगे, ये हमको अपना पैटर्न बना लेना है. हम अपने आप को a से b और ft dt, चूंकि डमी वेरिएबल्स है, इंटीग्रल्स आर हैविंग डमी वेरिएबल्स, सो इट डज नॉट मैटर कि क्या आप लिख रहे हो, राइट. इंटीग्रल a to b fx dx is same as इंटीग्रल a to b fy dy. ये तो पता ही होगा सभी को. So हम क्या कर देते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से. I को पहले हम t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0 to 1 1 upon 1 plus t dt. ओके, सो ये हमने इसलिए किया ताकि हम इस वाले मेथड का यूज कर सकें, अदरवाइज बाद में हम फार्मूला अगर भूल गए तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है. नाउ हियर a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1, इसको हमें क्या करना है, -1 से 1 कन्वर्ट करना है. So we have to use the transformation t is equals to b minus a by 2 of x plus b plus a by 2. b minus a by 2 भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 by 2 of x plus b plus a by 2 भी आपका 1 by 2. That means ये हो जाएगा x plus 1 whole upon 2. t is equals to x plus 1 whole upon 2. t को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो dt is equals to क्या हो जाएगा, 1 by 2 dx. सिंपल इंटीग्रेशन का चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है. सो दिस विल गिव यू, dt की जगह पे क्या रख दोगे, dx by 2 1 upon 1 plus t की जगह पे क्या रख दोगे, x plus 1 by 2, x plus 1 by 2, और सिंप्लीफाई कर लो इसको. और लिमिट क्या हो जाएगी अब x की, -1 से 1. ये तो हमें पहले से पता है, फिर भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे. I already told you कि a to b limit will be converted from -1 to 1. Still you can check it from here. If you put t is equals to 0, then x is equals to -1. If you put t is equal to +1, then x is equals to +1. So -1 से 1 लिमिट हो जाएगी हमारी. Okay. Now you can see that this gives me -1 to 1 and dx upon x plus 3. This whole calculation is this. This you have already solved in the previous slide. -1 to 1 x plus 3. In the previous slide you have already solved. So this is equals to 0.692 है, क्या है 692, 0.692 from previous slide. I don't need to do it again, right? Previous slide से हमने क्या किया है, using Gauss-Legendre 2 point. You can apply Gauss-Legendre 2 point because the limit are from -1 to 1. Therefore, you can apply Gauss-Legendre 2 point method. So from the previous slide, we have got this answer. Is that okay?
can fx is equals to x4 be in Gauss legendary 2 point? Yes, you can find out. So any function you can find out. Only thing is that linear function तो easily integrate हो जाते हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम? This is a good question. So whenever you learn something, you learn the basics first, and you want to understand whether whatever you are learning, whether they match with that one. I could have given you a very complex example, and then I would have convinced you that this is correct answer. And then you will say that, sir, how do you know that it is correct answer, right? So I'm convincing you with the help of these examples. इतनी मेहनत करके इसलिए करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई नहीं, ये आंसर्स जो हमारे इन वाले सिंपल वाले इंटीग्रल से आ रहे हैं, ये भी बहुत इजीली आ रहे हैं। तो अगर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा उसका आंसर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? वहां पे कुछ मैजिक नहीं हो रहा है, नो मैजिक इज हैपनिंग देयर, राइट? दैट्स व्हाई हम लोग ये सिंपल वाला एग्जांपल कर रहे हैं। Sir, by transforming the function can be solve all types of definite integral. हाँ, a to b जिसमें भी फाइनाइट वैल्यू है वो हम सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। a b तो अब कोई भी वैल्यू हो जाएगा तो उसको हम -1 से 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन वी कैन सॉल्व दिस वन। ओके, ऑल राइट, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ आपने कुछ किया हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी इजी कर रहे हैं, एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स वाला भी कर लेते हैं। So it's not very complex, but pretty complex. Suppose you have to integrate 0 to 2 dx upon x square 2x plus 10, है ना? तो this can also be integrated exactly. इसको भी आप पूरा पूरा exactly आप integrate कर सकते हो, इसका exact integral आपको मिल जाएगा। So here if you notice carefully, a is equals to 0, b is equals to 2. Therefore Gauss Legendre 2 point should, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं should not be applied डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट्स आपकी 0 से 2 के बीच में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। t इज इक्वल्स टू b माइनस a बाई 2, दैट इज 2 बाई 2 1 प्लस b प्लस a बाई 2, सो t इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले i को t में रखिए, i का t में रखने पर क्या हो जाएगा? 0 टू 2 dt अपॉन t square plus 2t plus 10, and then the transformation will give you -1 to 1. You substitute it here, dx upon x plus 1 whole square plus twice of x plus 1 plus 10, x plus 1 whole square plus twice of x plus 1 plus 10, which eventually will give you -1 to 1 dx upon x square plus 4x plus 13. I think that is the correct value. So x square plus 4x plus 13. Yes, that's correct value. अब ये देखो क्या बन गया? fx dx. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप अपना गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई गॉस लेजेंड्रे 2 पॉइंट। So this will give me 1 upon -1 by √3 whole square plus 4 into -1 by √3 plus 13 plus 1 by √3 whole square plus 4 into 1 by √3 plus 13. When you do that, use the calculator. When you do the calculation, you will get the value 0.154638. So this is the answer which you will get. All right.
यस, कल थोड़े से सवाल आप लोगों से भी करवाएंगे. टुमारो इज द ट्यूटोरियल सेशन ना, तो उसमें वी विल डू दैट. ओके, डोंट वरी पीयूष, आई लेट यू डू. Lagrange's quadratic polynomial का डेरिवेशन आई विल सी टू इट. सप्लीमेंट्री मटेरियल में मैं डाल दूंगा. क्लास में मैं देखता हूं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवा सकता हूं. लेट मी सी. All right, so far it seems everything is fine. Now what we will do is that we will derive the Gauss-Legendre 2-point formula. Okay, so please pay your complete attention. So the derivation goes simply like this. We assume that the integral of any function fx in between -1 to 1 equals to lambda 0. So it's a 2-point, है ना, 2 पॉइंट है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा 0 fx0 और लैम्डा 1 fx1, जहां पे x0 और x1 दोनों क्या हो रहे हैं, x0 एंड x1 आर लाइंग बिटवीन -1 से +1. -1 से +1 के बीच में कोई भी पॉइंट्स हैं वो वाले. सो इनिशियली अर्लियर तो हमारे क्या होता था, x0 x1 ये सब हमें पता होते थे. यहां पर क्या है कि लैम्डा 0 लैम्डा 1 x0 x1 ये सारे के सारे हमारे अननोन है, हमें पता नहीं है. ठीक है ना. आल्सो हम ये मान के चल रहे हैं कि लैम्डा 0 0 के बराबर नहीं है, लैम्डा 1 0 के बराबर नहीं है, और x0 x1 के बराबर नहीं है. Why is it so? क्योंकि अगर लैम्डा 0 0 हो गया तो क्या होगा, केवल लैम्डा 1 x1 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट रूल नहीं रह जाएगा. रूल तो 2 पॉइंट का है. अगर लैम्डा 1 0 हो गया तो सिमिलरली ये 2 पॉइंट रूल नहीं रह जाएगा, बिकॉज लैम्डा 0 fx0 केवल बचेगा. अगर x0 x1 के बराबर हो गया तब भी ये 2 पॉइंट रूल नहीं रह जाएगा. तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो ये इंश्योर करने के लिए हैं कि यहाँ पे कम से कम 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे. तो these 3 conditions they ensure that we get at least 2 points for the evaluation. So at least 2 points x0 and x1 are there. That's why we have taken these 3 conditions, and you will see that these 3 conditions will become very important when we use this derivation. Okay, now we say that our method is good. All right, otherwise nothing will work. So assume that this integration equals to these 2 point values, that star is exact. Exact का मतलब समझते हो कि अगर हम fx की इंटीग्रेशन निकालें तो वो लैम्डा 0 fx0 लैम्डा 1 fx1 के बराबर ही आए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए. तो assume that star is exact, that is left hand side equals to right hand side for fx is equals to, fx की हम स्पेशल चॉइस ले रहे हैं यहाँ पे. fx को अगर हम 1 ले लें, fx को अगर हम x ले लें, fx को अगर हम x स्क्वायर ले लें, और fx को अगर हम x क्यूब ले लें. हम ये चाहते हैं कि 4 फंक्शन अगर हम fx के ये वाले चूज, हम पहले से ही फिक्स कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी 4 फंक्शन, इन चारों फंक्शंस को अगर हम चूज करते हैं, ये वाले, 1 is constant function, x is linear function, x square is quadratic function, x cube is cubic function. These are simplest functions possible, and therefore we are choosing them. Simplest possible polynomial functions, so we are choosing them. एक क्वेश्चन जो मन में आ रहा होगा कि why only 4 such functions, है ना. ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो मैंने पूछ लिया तो आएगा ही आएगा, तो ये मैं बाद में बताऊंगा. ओके, so since we have assumed that we get the exact value for fx is equals to x, etc. So suppose I substitute here fx, put fx is equals to 1. fx is equals to 1 स्टार में रखने से क्या होगा,
स्टार विल इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखोगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा 2, है ना। 1 का इंटीग्रल -1 से 1 के बीच में 2 हो जाएगा। लैम्डा 0, fx फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो fx 0 भी 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा 1, तो स्टार जो है आपका लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब fx = x रखोगे तो देखो क्या होगा, स्टार में स्टार विल एम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड -1 to 1 x dx, हार्ड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 x 0 बिकॉज fx इज x प्लस लैम्डा 1 fx1 दैट इज fx1 = x1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 0 = लैम्डा 0 x 0 प्लस लैम्डा 1 x1। सिमिलरली जब आप fx = 2 fx = x² रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तीसरी कंडीशन यहां से मिल जाएगी, fx = x रखेंगे तो x² का x³/3 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2/3 = लैम्डा 0 x 0 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 x1 स्क्वायर। और लास्ट कंडीशन जब fx = x³ रख देंगे तो फिर से ऑड फंक्शन है तो हमें 0 मिल जाएगा, तो 0 = लैम्डा 0 x 0³ प्लस लैम्डा 1 x1³। ये हमें 4 फंक्शंस मिल गए, ठीक है ना। I'll make the slide little bigger so that we can see while making the calculation. इन 4 फंक्शंस को हम क्या कर लेंगे, इन 4 इक्वेशंस को, लाइक दिस इक्वेशन, इसको हम कॉल कर लेंगे A, this equation I will call as A, this equation I will call as B, this equation I will call as C, this equation I will call as D, ठीक है ना। B मतलब ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं 4 इक्वेशन ABCD मिल गई, ओके। अब ABCD को अगर आप ध्यान से देखोगे तो B और D इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 0 है। You know, it is simpler to deal with lesser number of terms than more number of terms. इसमें केवल 2 ही टर्म है, इसमें 3 टर्म है, सी इक्वेशन में भी 3 टर्म है और डी में भी 2 ही टर्म है। So what we do is that we try to attempt and solve first the equation with lesser number. Okay, so let us attempt to solve B and D. B and D. ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे अननोन कौन कौन है, लैम्डा 0 लैम्डा 1 x 0 x1। So how many unknown are here? 4 unknown. And how many equations are there? 4 equations. लेकिन इक्वेशंस कैसी हैं, नॉन लीनियर हैं। लीनियर होता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती, ये इक्वेशंस कैसी हैं, नॉन लीनियर है, LINEAR, नॉन लीनियर इक्वेशंस है। 4 अननोन है, 4 नॉन लीनियर इक्वेशंस है, but still we can be able to solve, but will not be able to solve like matrix method or any other method. We have to see a simple trick in order to solve them, and that is where the answer lies. तो हमने ये 4 फंक्शन इसीलिए सेलेक्ट किए थे बिकॉज हमारे पास 4 अननोन थे। So in order to solve 4 unknowns, you need at least 4 relations, and therefore you are choosing 4 functions so that you can get 4 relations. That's why we have got 4 relations. Okay, so that's why we have chosen 4 functions. So I hope that answers the question. So B and D में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेट लैम्डा 0 फ्रॉम B and D. So B में क्या है, लैम्डा 0 x 0 प्लस लैम्डा 1 x1, और D में क्या है, लैम्डा 0 x 0 क्यूब। तो अगर लैम्डा 0 आपको एलिमिनेट करना है तो B में क्या होगा, x 0 स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें उसके बाद में एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो D इक्वेशन आपकी देखो क्या है, मैं अभी थोड़ा सा लिख दे रहा हूं यहाँ पे। D इक्वेशन है लैम्डा 0 x 0 क्यूब प्लस लैम्डा 1 x1 क्यूब इक्वल्स टू 0, और B इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, x 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा 0 x 0 क्यूब प्लस लैम्डा 1 x 0 स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। और अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इस पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
When you do that, you will find that lambda 1 is common, x1 is common, so you will get x1 square minus x0 square equals to 0. ये हम अलग लिख लेते हैं. जैसे हम एलिमिनेट करेंगे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, लैम्डा 1 x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. आप लोगों को पता होगा, इफ एनी प्रोडक्ट इज 0 देन द कंपोनेंट्स should be 0, right? So from here you will have options. First option is lambda 1 equals to 0. Second option is x1 equals to 0. यहां से देखोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे. पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, x1 equals to x0, और दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, x1 equals to minus x0, because this is x1 square minus x0 square, that will have factor x1 plus x0 and other will be having factor x1 minus x0. So these are the four options. So let us discuss these options one by one. Lambda 1 equals to 0. आपने तो पहले लिखा हुआ lambda 1 not equals to 0. lambda 1 equals to 0 क्या हो जाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यू विल नॉट कंसीडर इट. फिर x1 इक्वल टू 0, इज x1 0 पॉसिबल है क्या? लेट अस सी इफ x1 इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल. सपोज इफ x1 इज इक्वल टू 0, तो अगर x1 हमारा 0 हो जाएगा तो b इक्वेशन में देखो क्या होगा, लैम्डा 1 x1 हमारा 0 हो गया, लैम्डा 1 x1 हमारा 0 हो गया. तो इससे यहां से क्या मिलेगा, b इक्वेशन से lambda 0 x0 is equals to 0. Then from b we will get lambda 0 x0 equals to 0. इसका मतलब क्या हुआ, या तो lambda 0 0 है और x0 0 है. अगर lambda 0 0 है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. सेम लॉजिक से जैसे lambda 1 0 नहीं था, और x0 अगर 0 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. Why this is not possible? Because in that case both x1 and x2 is equals to 0. Not possible because x1 not equals to x0. ये आपने पहले से assume करके ये भी चला हुआ है कि x1 और x0 बराबर नहीं है. अगर ये x0 0 हो गया तो x1 और x0 वो हो जाएगा. So that means ये दोनों चीजें भी आपकी not possible की कैटेगरी में पहुंच गई. अब x1 x0 के बराबर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस x1 not equals to x2. So this is also not possible, तो ये भी not possible की कैटेगरी में पहुंच गया, not possible. तो बचा क्या आपके पास में, x1 is equals to minus x0. तो ये जो x1 is equals to x0, this is possible, और इसको हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे, ठीक है ना, x1 is equals to x0. तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो x1 is equals to x0 है उसको हम b इक्वेशन में लिख देते हैं, ठीक है ना. x1 is equals to x0, then b will imply that lambda 0 x0 plus lambda 1 x1 is equals to minus x0 is equals to 0. x0 is not 0, है ना. So what you will get from here is that lambda 0 x0 is not 0, you have already proved that one, right? So यहां से क्या हो जाएगा, lambda 0 is equals to lambda 1. So lambda 0 यहां से lambda 1 के बराबर आ गया. So दो चीजें आपको यहां से lambda 0 lambda 1 के बराबर आ गया. अब a इक्वेशन देखो आपकी क्या इंप्लाई करती है, यहाँ a है lambda 0 plus lambda 1, lambda 0 plus lambda 1 is equals to 2. This implies that lambda 0 equals to lambda 1 equals to 1, because lambda 0 lambda 1 के बराबर है, तो दोनों को यहाँ पे सम कर दोगे तो 2 lambda 0 will be equals to 2, that means lambda 0 is equals to 1, and lambda 0 lambda 1 के बराबर है, इसलिए दोनों की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी. तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि lambda 0 lambda 1 इनकी वैल्यू, तो आपकी lambda 0 lambda 1 की वैल्यू मिल गई. Once you have got the values of lambda 0 and lambda 1, what you do is that you substitute the value of lambda 0 and lambda 1 in equation number C. You have not used equation number C so far. So C देखो क्या है, as soon as you substitute the value, C is lambda 0 x0 square plus lambda 1 x1 square equals to 2/3. आपके पास दो चीजें पता हैं, x1 x0 के नेगेटिव x0 के बराबर है और lambda 0 lambda 1 की वैल्यू 1 के बराबर है. तो ये अप्लाई करने पर यहां से आपको क्या मिलेगा,
this implies that lambda 0 is 1, x0 is equals to x1, so यहाँ पे हो जाएगा x0 square और 2 हो जाएगा, 2x0 square is equals to 2 by 3, which will imply that x0 is equals to plus minus 1 by root 3. Okay, so if you choose from here x0 is equals to minus 1 by root 3, then x1 will become from here plus 1 by root 3. So यहां से आपके पास में देखो क्या हो गया, x0 भी मिल गया और यहां से आपके पास में क्या हो गया, x1 मिल गया. Substitute this x1, x0, etc. here and lambda 0, lambda 1. So what do you get? You will get your Gauss-Legendre 2-point rule. This is how the values are given. Lambda 0 का value 1, lambda 1 का value 1, x0 का value minus 1 by root 3, x1 का value plus 1 by root 3. Notice करो कि अगर आप x0 को plus 1 by root 3 भी choose कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because eventually it is f of 1 minus 1 by root 3 plus f of plus 1 by root 3. So you get the Gauss-Legendre 2-point rule. I hope this is clear. Let us see chat में. There are some things shared. I don't know what is shared. ये क्या है? Okay. So as I told you, 30% clear. Okay. All right. Okay. So just try it. It's not very difficult. The whole point is how to solve nonlinear equations. There is no specific rule to solve the system of nonlinear equations, and therefore you may need to look at it. Okay, that how to solve. So entire point is based on these 4 equations. How to solve these 4 equations. I think rest of the point must be clear, that what we have done, how we have done, maybe a little bit tricky. Okay. एक और चीज कर देते हैं, फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे. So in the similar pattern, what we do is that, so the question should come to our mind is that, can we choose only 2 points or can we choose more points? So answer is that you can choose multiple points. Okay, so instead of 2 points we can choose 3 points also. Later on I will tell you how to choose, why to choose 2 points or why to choose 3 points only. That also I will tell. So when we choose 3 points, the method is called Gauss-Legendre 3-point rule. Naturally, when you are choosing 3 point, you should expect that it will give us better result than Gauss-Legendre 2-point rule, because you are evaluating the value of the function at 3 points. In Gauss-Legendre 3-point, any integral of the form fx dx can be written as lambda 0 fx0 plus lambda 1 fx1 plus lambda 2 fx2. Now it will become more complex, so I'm not getting into the derivation. So here, when you do the derivation, you will find that lambda 0 is equals to lambda 2 is equals to 5 by 9. Lambda 1 will come out to be 8 by 9. x0 आपका जो है वो minus root 3 by 5 आएगा. x1 आपका 0 आएगा और x2 आपका plus root 3 by 5 आएगा. And therefore ये जो मेथड है ये क्या हो जाएगा, -1 to 1 fx dx. ये method after substitution all these values. So this is the final method which you will get. 5 by 9 f of minus root 3 by 5 plus 8 by 9 f of 0 plus 5 by 9 f of root 3 by 5. So this will be the method which you will get. Okay, so this is referred as Gauss-Legendre 3-point, because you are evaluating the integral values of the function at 3 points. So this is referred as Gauss-Legendre
3-point formula. Okay. Here also the limit is -1 to 1. So you should notice that the limit is -1 to 1. So here also, if limit is a to b, then we can transform, वही वाला पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इट टू -1 to 1. तो हम इसको -1 से 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. सो द फॉर्मूला विच इज गिवन टू अस वी कैन अप्लाई. ओके, so this is referred as Gauss-Legendre 3-point method. Okay, we will in the next class we will see. Till then you will see tomorrow this example though, but if you are interested you can try and solve this one using 2-point and 3-point. 1 to 2 2x dx upon 1 plus x raised to power 4. इसको आप चाहो तो जो है वो you can try it. You can try. We shall solve it in tomorrow's session, but you can try it. Notice carefully the limit is 1 to 2. Okay, so you can try it. Okay, all right. So we'll stop here. We'll stop recording as well. सर ये पीपीटी